नमस्कार। आज हम आए हैं एक खेत में किसान का इंटरव्यू लेने और आज हम उनसे पूछेंगे कुछ सवाल, तो देखते हैं उनका क्या कहना है। आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश। और आप खेती कब से कर रहे हो? खेती मुझे हो गई 10 साल कम से कम करते। 10 साल से खेती कर रहे हो और आपको इस 10 सालों में मतलब क्या इंटरेस्ट है, खेती क्यों करते हो आप? भाई खेती तो कोई और काम तो है नहीं हमारे पास खेती के अलावा। या तो कोई मेहनत कर लो या फिर खेती कर लो, ये की बात है। और आपने सोचा है कभी, मतलब बचपन से तो ये नहीं सोचता बंदा कि खेती करूंगा मैं बड़े होके, तो आपने बचपन से क्या सोचा है? कुछ सपना था आपका? अरे बचपन में तो बहुत सोचते हैं पर वह कहाँ है, बस अपने कहा पूरे होते हैं किसी के। आपका था क्या? और आप हर ही किसी के होता है सपना तो। आपका क्या था? हाँ हमारा था, और क्या भाई हमारी नौकरी लग जाए, लेकिन नहीं लगी। और खेती बाड़ी में दिक्कतें क्या आती हैं? दिक्कत तो बहुत आती हैं, जैसे वर्षा वर्षा नहीं हुई, मौसम खराब हो गया तो अब घाटा पड़ जाता है। कभी कभी बहुत घाटा पड़ता है, कभी कभी मुनाफा भी हो जाती है, ये है। और घर पे मतलब कोई दिक्कत नहीं होती खेती बाड़ी से? वैसे कोई दिक्कत नहीं होती है गाँवों में तो ये होती है फसल भाई। जैसे अब की ये लॉकडाउन था, इसमें बहुत दिक्कत आई हमें। मेरे पास गुलाब था बहुत, 2-3 भी गुलाब कर रखा है मैंने। जैसे दूसरी आप सेठ की जमीन लेके दूसरे की, हमारी सेठ की जमीन है ये वाले? हाँ, तो इन पे 2-2.5 बीघे जमीन पे गुलाब है, गुलाब की खेती फूल की। तो उसमें बहुत दिक्कत आई है क्योंकि उसमें पैसा ही नहीं मिला। पूरी 5-6-7 महीने हो गए, फूल अब बिकने लगा है थोड़ा बहुत। अब ये है। ठीक है अब फिर। गोभी की है मैंने, गोभी साली बहुत 4 महीने गोभी को हो गए, और उसमें बीज ऐसा हेठा निकले आया कि वो 1 महीने लेट चली। जब से बहुत अच्छा भाव था, अब भाव नहीं है। अच्छा। तो ये दिक्कतें आती हैं। और सरकार की कुछ योजनाएं आई है, आपको पता है उसके बारे में? अरे सरकार की कोई योजना नहीं मिलती वैसे। अगर किसान की जो खेती घर की होती है ना, उनको तो मिल जाता है। और जैसे हमने लीज पे ली किसी पे से और हमने फसल की और उसमें नुकसान चलेगा तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा। और आपकी कुछ सरकार से डिमांड है? सरकार से यही डिमांड, कोई सहायता मिले। जैसे मजदूर आदमी को सहायता मिलनी चाहिए ना, वो कहाँ मिलती है? मिलती है तो किसान को, जिसमें निजी जमीन है उसके नाम है, उसी को मिलती है। जैसे हम मजदूर हैं या किसी की लीज पे लेके जमीन करी हमने, उसको सहायता मिलनी चाहिए। उसकी फसल या ओले पड़ गए या वर्षा नहीं पड़ी, नष्ट हो गई, तो उसमें उसको नहीं मिलती है, उसी को मिलती है जिसका खेत होता है। अच्छा। हम्म। चलो ठीक है फिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती समय के लिए। So now we are going to make a eco-friendly manure. So moving towards our ingredients, it's our first ingredient which consists of vegetable peels and fruits peels like banana, apple and our eggshells. So let me tell about this. Our banana peel is rich in potassium as well as it increases small amount of nitrogen and phosphorus and magnesium. And our green kitchen waste, these are high in nitrogen and helps to activate the heat process. Now these are our eggshells. Eggshells are rich in calcium carbonate, and calcium helps the plant to develop the strong cellular structure. Towards our second ingredient, which is gaumutra, or we can say cow urine. Instead of water, we are going to use it here because it is rich in minerals and many enzymes. It helps to increase plants resistance to the pest attack, cause in hilly area there is no growth of neem, so we are using this. And moving towards our third ingredient, which is cow dung. Okay, it makes excellent growing medium for plants, nutrition rich fertilizer, and it adds mineral rich in sulfur and phosphorus. So moving towards our fourth ingredient, which is our garden soil. Our garden soil our garden soil will keep bad smell away to fasten the composting process. And moving towards our next ingredient, which is dry leaves.
It helps in covering the upper layer to retain heat and moisture, which are two essentials of our compost. And our last and final ingredient is humus, which is the top layer of a good soil, or we can say a fertile soil. We have started to make our eco-friendly manure. So in a bucket, add the garden soil with humus, and it will be of 1 inch. Now we have added a layer of cow dung here. Now moving towards our next ingredient, we have added another layer of green apple vegetables and banana peels, and with our eggshells also. Now we'll add some humus in it. We'll be adding humus, a layer of humus in it. Okay, now again we'll add some green vegetables finally. Okay, here comes a layer of our dry leaves, which is good in moisture and will provide heat to our manure. Now we have covered our dry leaves with our garden soil, which will be around 1.1.5 inches, or we can take around 2 inches. Again, a layer of dry leaves above, and for our last and final step, we are adding gaumoot here. It's our last and final step. तो here I end my topic, and आज दिल से बहुत खुशी हुई है ये एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन किसान दिवस और आज हमारे फार्मर्स के लिए देते हुए। थैंक यू सो मच। Hi everyone, present over here. It's Mithilesh Chaudhary presenting you organic farming on the occasion of Kisan Divas and under the NSS activity. Organic farming is an agricultural approach in which the crops are grown in such a way that they will provide us optimum nutritional value and do not cause any harm to humans or nature. The main principle of organic farming is that health of the customers, ecological balance, fairness in the prices, care of plants. Organic farming only includes the natural manuals, natural things. Permaculture is a term used to describe an intellectual system of agriculture and settlement that aims to reflect the interrelationship and sustainability of nature. Ecosystem it draws from several disciplines including organic farming, forestry, integrated farming, sustainable development, and applied ecology. Ranching is the type of another farming in which large farm is run in, especially one which has many raisins, cattle, horses and sheep, which give things essential for farming. Hydroponics is most advanced method in which plants are planted between sand granules with added nutrients. Dryland farming is another method which is mostly done in the drought places. In the farming, only drought resistant crops are being sown. These days, our Indian is going towards technology. Organic farming had also developed advanced techniques which includes seed treatment where the seeds are treated for controlling of diseases environment freely and sown to be quick in germination to protect it against the ants and pesticides, etc. Tissue culture is also another thing which is helping the seeds to multiply the number of seeds in a great number for next generation. Also, growth hormones are added to reduce the time of germination and growing its short time. Cropping system is also one of the advanced technique in which the crop rotations are done after every interval for keeping soil full of nutrients and healthy. In our India, farming is considered as the main occupation and backbone of the country. These are the many advantages of organic farming, which includes economic balance as the materials used in organic farming are all cheap and homemade without more capital labors and land, which also helps in good returns of investment. As the products are grown in a less proportion, there is high demand for them, which increases their cost. Organic farming is not only benefited for us but also it's beneficial for nature as no pollution causing activities are practiced. Cloud agriculture system is one of the best thing done for the farmers as cloud has centralized knowledge bank which stores all the information about the crops to be sown.
They also give weather predictions which help the farmer to earn more profit and less chances of failures. Cloud also give information about current marketing statistics and agricultural tools to be used, which again provide them information for sales, best price and earn profits. They serve us by the development models. They are private model which provide service by softwares, community model provides service by platforms, public model which provides service by infrastructure and self-service on demand. So I end and thank you so much. Hello everyone. Let's start with the quote. My grandfather used to say that once in your life you need a doctor, a policeman, a lawyer, and a preacher, but 3 times a day you need a farmer. I am Prathamesh Jadhav from Maharashtra, and my topic is why farmers are important for us. Farmers. Farmers are the backbone of our society. They are the one who provide us the food that we consume. As a result, the population of our world is dependent upon the farmers. Be it that the smallest or the largest countries, due to them we are able to live on this earth. I think that one can live without clothes, one can live without shoes, one can live without the luxuries, all luxuries, but one cannot live without food. Food is the main thing, and that provides by a farmer. I think that they are having so much of importance, but they are not having the proper living. And that thing we want to change, and we want to go with that change through the NSS camp. I want to go with that, and I want to change that thing. And I am a part of NSS, and I am having this topic as a Kisan on the occasion of Kisan Divas. So I will end this topic by saying, winter's chill and summer's heat, the farmer work, then the world can eat. This is the main thing. Yeah. And thank you. Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Hind, Jai Maharashtra. Hi, I am Mithilesh Chaudhary, presenting you my poem किसान. इस धरती से जुड़ा हूँ मैं, परिस्थितियों से अड़ा हूँ मैं, दिन रात बस चिंता करता हूँ मैं, राजनीतियों के बीच उलझता हूँ मैं, जीने के लिए दर दर भटकता हूँ मैं, हर दिन घबराता हूँ, आखिर सब हार के मर जाता हूँ, फिर भी न जाने क्यों इस देश की रीति रखी कहलाता हूँ, बस एक मामूली सा किसान हूँ. थैंक यू. खुद को आज थोड़ा और खींचता हूँ, इन फसलों को गहरे खून से सींचता हूँ, भर देता हूँ तुम्हारे पेट मरने से पहले, अपने अस्तित्वों से सारा खेत बींचता हूँ. थैंक यू. और थकान अपनी खाता हूँ, भूख प्यास और थकान अपनी खाता हूँ, मैं किसान हूँ जनाब, मैं अन्न उगाता हूँ. सूरज हो या बारिश हो या चाहे तूफान, सूरज हो या बारिश हो या चाहे तूफान, अपनी धरा में हल चलाने से ना घबराता हूँ, अपनी धरा में हल चलाने से ना घबराता हूँ. मेरा भारत अपना पेट भर सो सके सुख चैन से, मेरा भारत अपनी पेट भर सो सके सुख चैन से, इस आशा में धरा को रक्त से सींचता हूँ, इस आशा से धरा को रक्त से सींचता हूँ. भूख प्यास और थकान अपनी खाता हूँ, मैं किसान हूँ जनाब, अन्न उगाता हूँ. धन्यवाद.